चलिए, hello everyone, welcome to online classes of Saraswati Education with Bhadra June. This is our class 8 subject maths and chapter number 5th and exercise number 5.2. In our exercise number 5.2, this is our question number first, and our question number first, actually I have started solving this question in our very previous video, and in this video now I will solve our second part. What is our question number first? I am just repeating orally. I am not going to write because question is language is very big, and if I will go for writing, then the half word will covered by that language only. Okay, then where we will find a place for solving the exact question. So you just listen, okay, and you will be very clear what is asked in this question, which is our question number first. Okay, so a survey, question first is, a survey was made to find the type of music that a survey was made to find the type of music that actually question of first is, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Okay, adjoining pie chart shows the findings of this survey. This pie chart shows the findings of this survey, which is made what sort of or what type of music the young people likes in a certain city. Good. Okay, so here this part likes light music, this part likes folk music, this part likes classical, and this one likes semi classical. Okay, so first one is, from this pie chart answer the following. Okay, first question I have solved in our very previous video, which was, if 20 people liked classical music, how many young people were surveyed? Okay, if 20 people likes classical music, this part is equals to 20 people, then how many people are there in this whole group? Okay, or how many people take part in the survey? Okay, this is asked, this is our question, this is our query. Okay, so what we will do is, listen, this part which I have just read for you, मतलब जो पार्ट मैंने अभी भी पढ़ा है ना आपके लिए, वो पहले वाले वीडियो में सॉल्व कर दिया है, ठीक, और आपको समझ में आ भी जाएगा वहाँ पे. अब अपन ये दूसरा वाला पार्ट लेते हैं इस वीडियो में. क्लियर है ना? चलिए, जो कि हमें क्या है दूसरा वाला पार्ट, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. कौन से टाइप का म्यूजिक है जो मैक्सिमम, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. पीपल तो जानते होंगे ना, पीपल के पेड़ देखे होंगे बहुत, वो नहीं है, वो पीपल नहीं, ये पीपल माने आदमी होता है, इंसान है ना, भीड़, रश, क्राउड. ठीक, पीपल मीन्स लोग. गुड. चलिए, तो अपने देखेंगे विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा कौन से प्रकार का म्यूजिक है ना लाइक किया जाता है, ये पूछा गया आपसे. ठीक, तो अपन देखते हैं भाई किस प्रकार का यूज़ किया जाता है, वो किस प्रकार का म्यूजिक लाइक किया जाता है. उसके लिए अपन देखेंगे, देखो हम ये देखते हैं भाई सबसे बड़ा कौन सा है इनमें, 30%, 20%, 10%, इन तीनों से ज़्यादा बड़ी संख्या है 40%. तो ऑफकोर्स लाइट म्यूजिक ही होगा, है ना. इसमें देखो ये बिल्कुल क्लियर है, मतलब आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, अगर मैं 5th स्टैंडर्ड या 4th स्टैंडर्ड के बच्चे से ही पूछूंगा, यानी आपसे हाफ स्टैंडर्ड के बच्चे से ही पूछूंगा, तब भी वो ये बताएगा भाई हाँ 30, 10, 20 और 40 बड़ा है सर, तो यही होगा. तो ऑफकोर्स लाइट म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल. गुड. चलिए, तो आवर आंसर फॉर आवर पार्ट सेकंड इज, आंसर इज लाइट म्यूजिक. आंसर इज लाइट म्यूजिक. ओके, सो व्हाट इज देयर, number third one, question number first and part third is what, if a cassette company were to make 1000 CDs, if a okay, number third one is, if a cassette company if a cassette company
Number third one is, if a cassette company were to make number third one is, if a cassette company were to make 1000 CDs, if a cassette company were to make 1000 CDs, okay, 1000 CDs, how many of each type would they make? How many of each type? How many? 1000 CDs, how many of each type? How many of each type? How many of each type? How many of each type would they make? WOULD, would they, what is their make? Okay, how many of each type would they make? गुड, चलिए, तो ये फर्स्ट का सेकंड हो गया और ये पार्ट हो गया आपके थर्ड. ओके, सो सेकंड आई हैव डन एंड थर्ड आई एम गोइंग टू स्टार्ट. गुड, सो be with me with full of your mind so that you will be able to understand properly. Good. So what is there? If a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? है ना, each type, प्रत्येक टाइप की कितनी वो बनाएंगे, है ना. तो if a cassette company were to make 1000 CDs, भाई देखो 1000 CDs बना रही है अगर एक कैसेट कंपनी, तो कितनी, हर एक टाइप की कितनी कितनी कैसेटें बनेंगी. तो पहले अपन बात करते हैं सेमी क्लासिकल की. गुड, नंबर ऑफ सीडीज, नंबर ऑफ कैसेट्स, सॉरी नॉट, इफ अ कैसेट कंपनी, ओके, नंबर ऑफ सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक, नंबर ऑफ सीडीज of semi classical music, सेमी क्लासिकल, क्लासी और उसका कल, ठीक, क्लासिकल म्यूजिक, नंबर ऑफ सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक इज व्हाट, नंबर ऑफ सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक इज व्हाट. क्या होगा भाई सेमी क्लासिकल म्यूजिक का नंबर ऑफ सीडीज, है ना. तो नंबर ऑफ सीडीज होंगी सेमी क्लासिकल म्यूजिक के लिए, वो देखेंगे अपन बहुत ध्यान से ना, बेहद ध्यान देना है हमारे को, भयंकर ध्यान, ठीक. तो भाई उसके लिए, भाई ध्यान, उसके लिए आपको कॉपी लेके बैठना चाहिए, भयंकर ध्यान देने के लिए ना, बेहद ध्यान देने के लिए कॉपी लेके आप लोग बैठोगे, रफली वैसे नोट करेंगे आप लोग, और फेयरली आप लोग नोट करते ही जाएंगे, फेयरली बाद में नोट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलती भी जाएंगी कि कोई प्रॉब्लम आपके साथ तो नहीं है, मतलब आपको प्रॉपरली समझ में आया है, आप आगे के क्वेश्चन समझने के साथ कर भी पा रहे हैं या नहीं. ये चीज़ अगर आपको एकदम सही से क्लियर करनी है तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप लोग जब लिखना स्टार्ट करें तो पहले रफ नोटबुक पे लिखें, उसके बाद फिर फेयर नोटबुक पे करें. गुड, चलिए, नंबर ऑफ सीडीज ऑफ सेमी क्लासिकल म्यूजिक इक्वल्स टू, एक्चुअली सेमी क्लासिकल का पार्ट 20% है ना, 20% ऑफ हाउ मेनी आर देयर, टोटल आर 1000. ओके, टोटल आर देयर, हाउ मेनी आर देयर, टोटल 1000 सीडीज. ओके, so number of CDs of semi classical music equals to 20% of 1000, 20% of 1000. What is there? 20% of 1000. Okay, this is the portion which I have to solve now. Good, 20% of 1000, 20% of 1000, 20% of what, 1000. Okay, now what we will do is we will start 20% of 1000. So this is equals to 20% is 100 into 1000. okay, this is this, so we will multiply 20 with 10, then what we will get is 200 is our answer, 200 is our desired answer. good, चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे अपन.
ये तो था अभी क्लासिकल म्यूजिक, इसके बाद वो सॉरी सेमी क्लासिकल म्यूजिक। अब चलते हैं अपन क्लासिकल म्यूजिक की तरफ। तो अपन हटा देना इसको, पहले पार्ट को हटा दें, वैसे ही आपको प्रॉब्लम रहती होगी। और कंजेस्टेड और लिखूंगा तो और ज़्यादा ना हो, इसलिए अपन इसको हटा देते हैं ना आसानी से, आराम आराम धीरे धीरे। चलिए फर्स्ट का ये फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया, लाइट म्यूजिक को हटा दिया है ना। चलिए second one is number of CDs of semi classical music I have solved. Now number of CDs of classical music, number of CDs of classical music, number of CDs of classical music is what? Number of CDs of classical music equals to 10% of, so this is 10% of what? 1000. Okay, this is 10% is removed by 100 and multiplied with 1000. Okay, now 10 into 10 is 100 is our answer. Good. Okay, so next one is fourth one. What is our fourth one? Not fourth one, this is not a proper part, this is the question is continuing, third part only. Okay, next one is folk, number of CDs of folk music, number of CDs of folk music, number of CDs of folk music is 30% of 1000. Okay, which is 30 upon 100 into 1000. Okay, so here it is 300. Good. Okay, next one is what is our next one? Our next one is light music. Okay, we will go for our next part which is light music. Light जानते हो ना आप लोग, जो नहीं है अभी रूम में, समझ गए हो क्या? चलिए ठीक। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट? नेक्स्ट वन इज लाइट म्यूजिक. So number of CDs for light music, and for writing the light music I am going to rub this one. Okay, I hope you have all noted up to question number 3 and both the parts. If you have done, if you do not have write up to, then just write. Okay, fast. So this is, I am going to write over here, would they make. Okay, would they make is also going. Number of CDs of light music, number of CDs of light music, number of CDs of light music, number of CDs of light music equals to number of CDs of light music equals to 40% of what? 1000, which is 40 divided by 100 into 1000, which is equals to, this is the 400 is our answer. 400 is our answer. ANS. Okay, 400 is our answer. 4 and 100 is our answer. Good. Okay, so this is end of our question number first. Now I am going to towards our question number second. And what is our question number second? Listen. Question number second is, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season. A group of 360 people were asked to vote for their favorite okay
Number second one is a group of 360 people. A group of 360. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season. Okay, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons. From the three seasons. Okay, rainy. First one is rainy. Second one is winter. And third one is summer. Next one is summer. Okay, which season got the most votes? I am going to make the figure which illustrates how many. Okay, now it is clearly visible. I hope it is clearly visible to you. Okay, so summer, okay, and winter and summer season, number of boats, two columns are there, and the two columns are, first one is season and second column is showing number of votes. Season, number of votes. Okay, first one is summer. And some sun is, okay, growing sun is indicated over here. Okay, second one is rainy. What is there? Some umbrella is there. Okay, this one rainy, and boats are 120. Okay, next one is winter. Some teddy bear is there. Number is 150. Okay, now our question starts. Our first part of our question is what? First part of our question is, which season got the most votes? 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 Question number second, first part is, which season got the most votes? Okay, second one is, find the central angle of each sector. Find the central second one is, find the central angle of each sector. Central angle of each sector. Find the central angle of each sector. Okay, third one is what? Draw a pie chart to show this information. Draw a pie chart
Draw a pie chart to show this information. Pie chart to show this information. Okay, draw a pie chart to show this information. Okay, so I'm going to just repeat the part, okay, for you. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons: rainy, winter and summer. A group of 360 people means number of people was 360, and they were asked to vote for their favorite season. 360 people were asked. Okay, actually this type of question was formed like as 360 people were asked, how is the condition of corona is going on in your locality or in your town or in your city, in your state, okay, in your country. Okay, so a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons: rainy, winter and summer. And this time the people are only asked about their favorite season from three seasons: rainy, winter and summer. Actually spring is also there, but we have to only decide from three seasons, and which are first one is our rainy, second one is our winter and third one is our summer. Got it? Okay, just make this figure. After that only you will be able to just understand, and keep in mind that you have to make the figure very clearly, because if you will miss a single step, then definitely you will misunderstood the question or will not be able to understand the question. Okay. Okay, now what we will do, now we will just only solve. Okay, and for going towards the solution, what we will do initially is we will see that which season got. I hope you all have understood up to here, and you all have noted the question up to here. Okay, so question number second, first part is which season got the most votes. Okay, so here I am seeing, look, this is 90, this is 120, this is 150. Again this is a very simple question, but if I will do it in a hurry, मतलब अगर मैं जल्दी से कर दूंगा ना तो तुम्हारे फिर ऊपर से निकल जाएगा, इसलिए मैं बहुत आराम से कर रहा हूँ, आप भी उतने ही आराम से उतनी ही तल्लीनता से अपने लिखें. गुड, चलिए. सो दैट वेन एवर यू विल get back to school, if you will check, then you will able to make us check that sir I have done this much. Okay, and I know each and every question how to solve. Good. चलिए, तो देखो भाई रेनी विंटर का सबसे ज़्यादा पोर्शन है 150, तो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स? सो आवर आंसर इज विंटर. आवर आंसर इज व्हाट? विंटर, एंड वोट्स आर 150. आवर आंसर इज विंटर with 150 votes. Good. Find the central angle of each sector. Very simple. Actually, if we will add these three, then what we will get? It depends on which type of angle they will make. Okay, or subtend on the center. So what we will do is 0 0 0 is 0. 9 5 plus 2 is 7. 7 plus 9 is 6. 1 carry. This is 360. Of course, the three angles are sum of the three angles is 360. Hence the central angle will be of summer is, actually I am going to write over here solution of question of part number second. Central angle of summer. Central angle of summer
equals to 90 degree. Central angle of what? Rainy equals to 120 degree, and central angle of what? Winter equals to 150 डिग्री। देखो भाई 150 इसका, 120 इसका, 90 इसका। गुड, चलिए ठीक। नेक्स्ट वन इज ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो। देखो भाई अपन ने ये लिखा है ना, अब मैं ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ ताकि इसको थर्ड को ऊपर किया जा सके, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस आ जाए। ओके, क्वेश्चन इज ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। एक्चुअली हमें एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है इस इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए। तो ये हमने पाई चार्ट का मतलब होता है राउंड में, है ना, आपने पिछले क्वेश्चंस में किए हैं इस टाइप के, ठीक। तो अपन देखते हैं 90। तो देखो पूरा एंगल 360 है, तो 90 क्या होगा? 1/4 होगा, यानी ये हो गया आपका 90। गुड, दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री एंड पार्ट ऑफ 90 डिग्री वाज समर, सो दिस पोर्शन इज शोइंग समर, ठीक। गुड, चलिए नेक्स्ट वन इज 120। तो मैं ऐसा मान ले रहा हूँ कि भाई 120 यहाँ तक है ना। दिस एंगल इज ऑफ 120 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑफ 150 डिग्री, ठीक। आप लोग उससे बनाएं कंपास से। 8th क्लास में क्या 6th क्लास में आपको सिखाया जाता है कि प्रोटेक्टर से हम कैसे एंगल्स बनाएं, तो उस प्रोटेक्टर से एंगल बनाना, ठीक। चलिए, तो 120 डिग्री वाला क्या है? ये पोर्शन शो कर रहा है रेनी एंड दिस पोर्शन इज शोइंग विंटर। देखो यहाँ प्रॉब्लम हमारे को इसलिए नहीं हुई है क्योंकि ये जो तीनों दिए गए हैं, इन तीनों का सम 360 है। अगर ये 360 नहीं होता तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती, ठीक है ना। तो इस वजह से वो होगी नहीं हालांकि आपके लेवल पे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको प्रॉपरली करें, बाकी भाई अपना ध्यान रखें, है ना। जय माता दी।